बताइएगा। So, once again, very good afternoon. Welcome back to the Unboring Academy. As yesterday we have discussed about the sectors of the Indian economy, the different point we have discussed. Likewise, primary, secondary, and the tertiary sector, and moreover, we have discussed about the comparison of the three distinct sectors, in which we have gone deeply in somewhere about the primary, secondary, and the tertiary sector. Moreover, yesterday we have also seen the graph of primary, secondary, and the tertiary sector कि किस तरीके से in a few 3 to 4 decades ये increase हुए हैं. Like in the year 1973-74, the graph was just about 6 to 7 lakh crore rupees, but in 40 years, last 40 years, it has reached a much more higher as it was expected. The main reason behind that was that there was a growth in the entire three sectors of the Indian economy. Either it was the primary, the secondary, or the tertiary sector. As we can see here in the graph that the three sectors have grown step by step, but as we can see here, अगर हम देखें तो देखते हैं कि यहाँ पे जो टेरिटरी सेक्टर है इसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया है फ्रॉम इन लास्ट 50 decades. And we have also gone through the services, different services of the tertiary sectors, likewise hospital, education, and all those things. So today we are going to discuss about the value of goods and services. Now the thing is that what is the value of goods and services? Value of goods and services is the final value of any goods, and moreover it includes the value of all the intermediate goods which are useful in producing the final good. एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको. जैसे कि अपन देखते हैं कि बिस्किट फैक्ट्री में बिस्किट लेने जाते हैं तो एक 100 ग्राम का बिस्किट इट कॉस्ट ₹20 to 30 rupees, बट and that is the final product which we have received. But in between, what are the intermediate things which has happened? Intermediate thing कि जो बिस्किट हमें मिला है वो स्टेप बाय स्टेप आकर के we have reached the final thing here. जैसे सबसे पहले किसान ने अपने खेत में गेहूँ उगाया, उसका आटा पीसा गया, उससे परचेज करके कोई ले गया, उसका आटा पिसाया, आटा पीस के उसने उस आटे को जो है बिस्किट फैक्ट्री या बिस्किट फैक्ट्री में सप्लाई दिया. अब बिस्किट फैक्ट्री में क्या हुआ, द बिस्किट फैक्ट्री वालों ने उस पर थोड़ा सा जो है शुगर ऐड किया, ठीक, थोड़ा सा फ्लेवर ऐड किया, एंड दे हैव invested in the packing of the product. जब ये तीनों चीज़ and after that they have baked all those things, what was the process of making the biscuit they have done, and finally the things which we got, that was the biscuit. And this packed biscuit, it was costing near about 30 to 40 rupees per 100 gram. अगर 100 ग्राम की कीमत 40 रुपये हम एक एस्टिमेट मानते हैं तो 1 किलो आटे की वैल्यू हाउ मच इट विल बी 400 रुपी per kg. But in between a lot of things also has happened na. The flour mill, he have purchased the wheat from the farmer, उसके बाद उसने सप्लाई दिया, फिर बिस्किट फैक्ट्री वालों ने अपनी एक्टिविटी किया, उसको पैकिंग किया, बेक्ड किया, फिर फाइनल प्रोडक्ट हमें तब जाके मिला. दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज और द इंटरमीडिएट थिंग विच हैज हैपेंड. नाउ सेकेंड थिंग इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? GDP. हम लोग अक्सर सुनते हैं कि हमारे देश की GDP घट गई, बढ़ रही है, थोड़ा सा डाउन हुआ, हाइक हुआ. ये GDP है क्या? GDP बोले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑल द प्रोडक्ट या सामान
जो कि which is made within the country by the manufacturer or the services which is being done in the country, all the outcomes of that product, it is called the gross domestic product. सारा इंक्लूड होगा, चाहे वो प्राइमरी का हो, सेकेंडरी का हो या फिर टेरिटरी सेक्टर का हो. ओवरऑल जो वैल्यूएशन सामने निकल के आती है वो होता है देश का जीडीपी. अच्छा, जीडीपी घटने से या बढ़ने से व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट, व्हाट द मैसेज इज बिहाइंड जीडीपी. अगर जीडीपी बढ़ रही है इट मीन्स कि देश में लोग इन्वॉल्व हैं, प्रोडक्शन इनसाइड द कंट्री हो रही है और अच्छे तरीके से विद इन द कंट्री मेड गुड्स लोग यूज़ कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ दैट जीडीपी इज इंक्रीजिंग. In case somewhere if there would be some disturbance due to which the products are not manufactured or there is a loss on the employment, in that condition the GDP goes down. GDP, it includes all the final value of the primary, secondary and the tertiary sector, including the service sector also. Now today we are going to go through one more topic, that is the historical change in the sector. अच्छा है, as we know that our country that is totally a agricultural based country. This sector has been grown rapidly in the 3 or 4 decades.